Good morning. Good morning, everybody. Namaskar. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat, India on this first day of December 2021, Wednesday. It's about 3:45 a.m. Early morning it is 3:45. मैं सूरज सिंह भारत इंडिया से बोल रहा हूँ. आज दिसंबर 1 2021 सुबह के करीब 3:45 और आपके सामने क्वालिटी के इशू के बारे में अगेन. टाइटल ऑफ टॉक एज यूजुअल, सिविल फील्ड इंजीनियरिंग, लाइफ इंजीनियर्स क्वालिटी and you can say contracts. And when contracts are involved, designs, construction, methods, every topic is involved, and importance is towards communication and coordination. And we can go to see these competency certifications which are for engineers, as well as another competency, legal competency certification of chartered engineer, and also corporate membership of chartered body, or you can say official body of engineers, that is called Institution of Engineers India, which was Royal Chartered in 1935 by British India Parliament, Queen George V. This body was established in 1920 as a company under Companies Act, and in 1935 this was incorporated by Royal Charter. Till now that Royal Charter has been in force. This body has been about 100 years old, and Charter you can say now it's 2021. 21 years plus 65 years. You can say how long this Charter has been. And there are 3 membership in this institution by type. Member, and lower one is AMIE, associate member, and there are other membership which are non-corporate membership. Just for your information I'm trying to tell. And this Chartered Engineer India is a chartered title. This title is included in the charter itself. It's not given by someone else. If one becomes member, or you can say one is elected to position of FIE or MIE or AMIE, one gets statutory authority, chartered authority to use this title, Chartered Engineer India, and language itself is authorized to use style and title of Chartered Engineer India. And of course this is another one which is also under international agreement, that is International Professional Engineers Agreement, to which India belongs as a permanent member. And India is represented by the Institution of Engineers India, and I was also elected to become International Professional Engineer India in year 2012, and my first consideration was as Professional Engineer India, that I was elected in 1995. My first charter was given to me in 1981 as associate member, in 1986 as member, and as 2016 as fellow. There are different criteria for election to this position depending on number of years of experience and expertise, as well as basic qualification of engineering, and that is degree. So BE or BE plus ME or BE plus ME plus PhD are counted along with integrity calculation of experience. And that is how this, when somebody uses these titles, there is no requirement of writing academical qualification. If you write, fine, that's up to you, but it is exclusive use as given in language or composition of. Are a little confused. This institution is executed by, is ruled by, is governed by Council of Institution of Engineers, which is governing body, which decides about each and every rules, each and every activity of institution,
Previously, this institution used to conduct examinations for, you can say, conducting graduateship courses which were equivalent to BE or BSc Engineering or BTech. Till 2013, information, because people should know, but ultimately our objective is quality. That is main consideration point of view. I will conduct separate talk about charter so that you must know what is our status. This charter has still in force and no one has repealed it. According to Constitution of this country, Article time of composition, at time of implementation, at time of commissioning of Constitution of this country. So in that article, it is a part of existing law, and you can read definition of existing law in first chapter of Constitution of this country, and that's very important point. This charter was granted by king of that time, and this comes under prerogative power, statutory power, whatever power have vested on king, means it is equivalent to Parliament Act, or you can say it is a part of Constitution of this country now, because nobody can repeal it and it has not been repealed. And this charter was addressed to members of Institution of Engineers, and members are corporate one. Corporate members constitute general body of institution, while all council members report to general body, though council members govern this institution, but under the guidance and direction of general body, that is total of all corporate members. This council is elected by corporate members, a general body, and these are elected according to votes online now, before it was in writing. According to law and according to opinion issued to it by Attorney General of this country in year 1958. It's only for your information. I'm going to quality. And this is my title here, Suraj Singh, FIE, Chartered Engineer India, Chartered Abhinayanta Bharat, International Professional Engineer India. My title is valid up to 2025. In 2025, I have to apply again for renewal. So my first application of charter was accepted, International Professional Engineer was accepted in 2012. Then it was renewed in 2015, in 20, and now it's valid up to 2035. Means you can say here, I can show you that. This is my title here. It's up to 30 September 2025 valid, and it was renewed around 30th September. Previous certificate was valid up to 30th September 2025. Because unnecessary keeping here no meaning, and as well as otherwise. When we talk of engineering, we talk of whole life, and that's where I try to include red book, silver book, white book, yellow book, etc. This I have shared with you
along with issues in relevance to engineering design, engineering construction, and of course engineering contracts, I should say, and contracts related disputes. Contract related disputes, which means very, very high level of disputes. Video and audio are tensing, not supporting well because of signals failure. Well, I say contract related disputes, which are very top disputes, and organizations, of course, communication and coordination, which are very useful, powerful. You can see this file. I always try to show to you put revisions on this. You can see these dates in header. So many dates, and yesterday also I changed some things. So likewise you can say संचार तथा संतुलन अत्यंत आवश्यक सही गुणवत्ता पाने के लिए. Of course some हिंदी संचार तथा संतुलन अत्यंत आवश्यक सही गुणवत्ता पाने के लिए. संचार means communication, संतुलन means coordination, or you can say तालमेल, coordination, balance, and गुणवत्ता means quality. Communication and coordination, most significant disciplines, subjects. We know this very well. लिखित में दस्तावेज आवश्यक है. मोबाइल से लंबी बातचीत का अधिक उपयोग सही नहीं. दूसरों को भी बातचीत का अवसर मिलना चाहिए. Written document is a must for reference. Written document is a must for reference, and we can say just mobile use dependence is not sufficient, and long talk must be avoided so that others should not wait for respective talking turn. A total understanding of defined specifications. A total understanding of defined specifications, Vinirdesh we call it in Hindi. Vinirdesh is a must to carry out every activity, or else incorrect activity shall be performed. A total understanding of defined specifications is a must to carry out every activity, or else incorrect activity shall be performed. नहीं तो आप सही काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्पेसिफिकेशंस की समझ नहीं है. It is responsibility of design specifying engineer to include demanded technical activity. ये जिम्मेदारी उस इंजीनियर की है, डिज़ाइनर की है जो डिज़ाइन दे रहा है. टेक्निकल एक्टिविटी कैसे करें उसको पूरी तरह से बताएं. और वी कैन से एज यूजुअल गुणवत्ता बिना सब काम बेकार. उत्तरदायित्व अभियंताओं का गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स टू अचीव क्वालिफिकेशन ऑन वर्क्स. एंड एज यूजुअल क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन आई ऑलवेज सेइंग, एंड वी कैन से एज यू कैन रीड, गुणवत्ता निर्माण में, जीवन में, सेवाओं में, हर कार्य में, शिक्षा में, समाज में, व्यक्ति में उतनी ही आवश्यक है जितना सांसों में. गुणवत्ता हर काम में आवश्यक. सुरक्षा बिना सब काम बेकार, व्यर्थ. उत्पादन है उद्योगों, शक्ति उपयोग, गुणवत्ता अभियंताओं के हाथ में है तो उसे लागू करना होगा. यू कैनॉट रन अवे. So quality has to be compliant with defined, specified, stated requirements within the ambit of work, designed valid specifications. And we know that गंदा विकास चोरों द्वारा, डकैतों द्वारा, क्या अभियंता उनके हाथ का खिलौना है? We have to understand that are we toys for those criminals or for the robbers and thieves who do not allow quality or want to just ignore quality. Every engineer has to understand quality is a must, a must, a must. Quality is
essential. Quality is essential. Engineers must realize quality facts, and in particular, civil engineers have to change quality aspects of society. You can refresh your memory on this issue and trying to show where we have to be very serious about in case of reliability, analysis, and you can say synthesis. सोच तथा एकाग्रता अत्यंत आवश्यक. Thinking and concentration certain powers. We have already seen this, and thinking based contemplation and must be achieved, as well as we have done all this. गुणवत्ता प्राप्त करने के लगातार कार्य सुधार की आवश्यकता होती है. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. CIQ गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य सुधार की आवश्यकता होती है. टू अचीव क्वालिटी और लेवल्स ऑफ क्वालिटी वी हैव टू कंटिन्यू. And quality can never be compromised. संचार तथा संतुलन अत्यंत आवश्यक. सही गुणवत्ता पाने के लिए कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन मस्ट. एंड यू कैन से विदाउट स्पेसिफिकेशंस यू कैन नॉट वर्क. बिना विनिर्देशों, विनिर्देश मीन्स स्पेसिफिकेशन, बड़ी मुश्किल से ढूंढा ये शब्द. बिना विनिर्देशों, स्पेसिफिकेशन को समझे कोई भी कार्य नहीं करें, क्योंकि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिकेशन या निर्देशों की अच्छी प्रकार समझना होगा. लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए. स्टॉप डूइंग वर्क विदाउट थॉरो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस. यू कैन नॉट कैरी आउट वर्क विदाउट थॉरो कॉम्प्रिहेंडिंग स्पेसिफिकेशंस. गुणवत्ता निर्माण में, जीवन में, सेवाओं में, हर कार्य में, शिक्षा में, समाज में, व्यक्ति में उतनी ही आवश्यक है जितना सांसों में. देखिए, उसको राइटिंग में जरूर लीजिए. मोबाइल से लंबी बात करते वक्त सही नहीं. और हम चलते हैं अब आगे, क्योंकि रोज रोज आपको जगाना मेरा उद्देश्य है, और इसीलिए कोशिश करता हूँ कि आप जागें, और जागना भी जरूरी है. इससे पहले मैंने आपको जनरल कंडीशंस के बारे में बता रहा था, कतार जनरल कंडीशंस, और उससे पहले वाइट बुक भी बताई. वाइट बुक के I just explained contents of white book, and it is contract general conditions which were applicable in state of Qatar, and this is 2007 version of that. I am just referring to this because I have experienced Qatar for 6 years as well as UAE for 6 years, and I earned my experience in those countries based on certain very high profile standards of specification. And also I can say that here is white book
to you, but for information these are necessary. किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं हम सबको पता तो होना चाहिए ना। बेशक हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड में नहीं हों, हम डिज़ाइन वर्ल्ड में हों, कुछ भी हों, फिर भी इनको जानना ज़रूरी है. वी हैव टू नो दैम. इट इज़ on this that there is what importance lies in. That's the important point is setting up setting out, and it was what else, program to be furnished. We have gone through that. Contractor superintendent because it's a survey point of view and very important point of view. The contractor shall be responsible. Contractor shall be responsible for true and proper setting out of works in relation to original points, lines and labels of reference given by engineer in writing, and for correctness, subject as above mentioned, of position, labels, dimensions, and alignment of all parts of works, and for provision of all necessary instruments, appliances, and workers in connection therewith. If at whatever time during progress of works certain errors shall appear or arise in position labels, dimensions, or alignment of whatever part of works, contractor or being required so to do by engineer or engineer's representative shall at its own cost, own expense, rectify such error to satisfaction of engineer or engineer's representative unless such error is based on incorrect data supplied in writing by engineer or engineer's representative, in which case expense of rectifying same shall be borne by PWA. PWA means authority or owner. Checking out of whatever setting out or of whatever line or label by engineer or engineer's representative shall not in whatever way relieve contractor of his responsibility for correctness thereof, and contractor shall carefully protect and preserve all benchmarks, site trails, bags, and other items used in setting out of works. दिए गए हैं डिज़ाइन में, लाइंस कह सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, लेवल्स कह सकते हैं. वर्टिकल कंट्रोल्स लेवल्स में आते हैं, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स आपके लेआउट में आते हैं. ये लेंथ है, ये विड्थ है, कितने एंगल पर है, कौन से पॉइंट से है, नॉर्थ कितना है, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट उसमें देखे जाते हैं, जीपीएस से लिंक कितना है, सब होता है. ये उत्तरदायी कॉन्ट्रैक्टर का है, ठेकेदार का है कि सेटिंग आउट को सही किया जाए जैसा इंजीनियर ने डिज़ाइन में दिया हुआ है उसके हिसाब से किया जाए, और अगर कहीं एरर मिलती है तो उसकी क्लैरिफिकेशन ली जाए, और अगर इंजीनियर ने डिज़ाइन गलत किया है और ये सच की गई है कि गलत निकला तो इंजीनियर को इन्फॉर्म किया जाए, और अगर उसकी वजह से खर्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारी इंजीनियर की या क्लाइंट की होती है. लेकिन ये सब जिम्मेदारी लगाने की साइट पे लेआउट करने की, वो कैसे भी किया जाए, अपने के ऊपर बेंचमार्क लगाना लेवल का या कोई ऐसा बेंचमार्क नॉर्थ साउथ का जिससे आप कोऑर्डिनेट को फ्लो कर सकें. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में कितना ग्राफ पर, और ज़मीन पे उस हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से आपको जो भी लैटिट्यूड है, डिपार्चर है, वो लाना, जहाँ परमानेंट है उससे अपनी साइड पे उसको फिक्स करना, और उसी तरह से लेवल को फिक्स करना कोई भी रेफरेंस से. ये सब इसमें ज़रूरी होता है. फिर उनके आगे फर्दर काम करना, अपनी फिक्स करना कोऑर्डिनेट्स को एक्सकेवेशन कॉन्ट्रैक्टर की होती है, उत्तरदायी कॉन्ट्रैक्टर का होता है. बहुत सोच समझ के, बड़े आराम से, ढंग से, कई बार वेरीफाई करके करना चाहिए, क्योंकि अगर सेटिंग आउट गलत हो गई और आपकी बिल्डिंग बन गई, स्ट्रक्चर बन गया तो सब गलत हो गया, समझ लीजिए आप.
उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू एंड प्रॉपर सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स in relation to original points, lines and labels of reference given by engineer in writing, and for correctness of position, labels, dimensions and alignment of all parts of works, and for provision of all necessary instruments, appliances and workers in connection therewith. इसमें मैं साफ साफ कह दूं कि मैं वही बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ बहुत पुराना है और हर एक की इंग्लिश अपने हिसाब से होती है। हम अपने माइंड से कहाँ कुछ लगता है गलत है तो उसको इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये मत समझना कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैं पढ़ूंगा, जो मेरे माइंड में आएगा उस हिसाब से पढ़ूंगा, क्योंकि कई जगह गलत इंग्लिश होती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये इंग्लिश की दुनिया है, ये इंजीनियरिंग की दुनिया है, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको ग्रामर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाए। जैसे जगह जगह आप देखेंगे एन लिखा होता है, एनी एनी एनी, एनी इज नॉट राइट वर्ड एनी, पर आई करेक्ट दैट। लेबर है, वर्कर मीन्स लाइक दिस। Satisfaction of engineers or engineer's representative unless such error is based on incorrect data supplied in writing by engineer or its representative, in which case expense of rectifying that shall be borne by client or owner or PWD in this case. Checking out of whatever setting out or of whatever line or label by engineer or engineer's representative shall not in any way relieve contractor of its responsibility for correctness thereof, and contractor would carefully protect and preserve all such benchmarks, site rails, pegs and other inclusions used in setting out works. So it's very common, आपको जो भी पॉइंट साइट पे लिए हैं उनको सुरक्षा करनी पड़ेगी, और अगर डाटा गलत मिला है तो उसको सही करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन लेके, इंफॉर्मेशन लेके। और अब चलते हैं सॉइल पर, सॉइल इन्वेस्टिगेशन पर, जो है बोरहोल्स एंड एक्सप्लोरेटरी एक्सकेवेशन। If whatever time during execution of works engineer shall require contractor to make boreholes or to carry out exploratory excavation, such requirement shall be ordered in writing and deemed to be in additional orders under clause 51 hereof, unless a provisional sum in respect of such anticipated work shall have been included in bill of quantities. क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर बोरहोल चाहता है इंजीनियर की बोरहोल और लगाएं हैं आप, और सॉइल की इन्वेस्टिगेट करें, तो उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो आपको पेमेंट उसका क्लेम करना पड़ेगा, और है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनरली कॉन्ट्रैक्ट में होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में, और ख़ास तौर से EPC में तो होता ही है। Contractor shall, in connection with works, provide and maintain at its own cost all lights, guards, fencing and watching, when and where necessary or required by engineer or its representative, or by whatever duly constituted authority for protection of works or for safety and convenience of public or others. जहाँ भी ज़रूरत होगी आपको वॉच करना पड़ेगा, लाइट लगानी पड़ेगी जैसे भी आवश्यकता है। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, सबको पता होना चाहिए यहाँ काम हो रहा है और कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, और गार्ड हो, प्रॉपर लाइट्स हो, आपके चारों तरफ फेंसिंग हो, जो भी साइट को बचाने के लिए, साइट को इंडिकेट करने के लिए, पब्लिक के लिए होती है, होनी चाहिए। देन केयर ऑफ वर्क्स, कार्यों की परवाह करना, कार्यों पर ध्यान देना।
कार्यों को समझ के अभी हम पढ़ते क्या लिखा उसमें। फ्रॉम commencement to completion, from commencement to completion of works, contractor shall take full responsibility for care thereof and all temporary works, and in case whatever damage, loss or injury happens to works or to whatever part thereof, to whatever temporary works from whatever cause or whatsoever, shall at its own cost repair and make good same, so that at completion of works it be in good order and condition, and in conformity in every respect with requirement of contract and engineer's instructions. In event of whatever such damage or any damage, loss or injury happening from whatever accepted risks, contractor shall, if and to extent required by engineer, and subject always to provision of relevant clause hereof, repair and make good same as aforesaid at cost of client. Contractor shall also be liable for whatever damage on works or to works occasioned by it in course of whatever operations carried out by it for purpose of complying with obligations. So once again I read it because this is also a very important clause. From commencement केयर, ये ठेकेदार की उत्तरदायी होगा कि उसकी पूरी देख रेख की जाए, उसमें चाहे टेम्पररी वर्क हो, कोई भी नुकसान हो, कोई भी इंजरी हो, कामों को या किसी और काम के हिस्से को कोई भी कारण हो, अपने पैसे से कॉन्ट्रैक्टर उसको ठीक करेगा कंप्लीशन तक, जब तक भी वो है उसको सही रखेगा, गुड ऑर्डर में रखेगा, कंडीशन में रखेगा, सही हालत में, और जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन की या इंजीनियर्स के इंस्ट्रक्शन की वो पूरा करेगा। और यदि कोई नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, इंजरी हो जाती है, कोई भी ऐसे रिस्क की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर उसको इंजीनियर के कहने के हिसाब से ठीक करेगा, और जो भी आपके आर्टिकल या सेक्शन कहते हैं, प्रोविज़न कहते हैं, उसकी रिपेयर करेगा और उसको सही करेगा। Contractor shall also be liable for damage to works occasioned by him in course of whatever operations accepted risks as defined in supply. Accepted risks are war hostilities, or you may say it's a part of you can say exceptional activities, exceptional events, or now also force majeure. You may say accepted risks are war hostilities, whether war be declared or not declared, invasion act of foreign enemies, rebellion, revolution, insurrection, or military or usurped referred to as accepted risks. So you got it. Means कौन से रिस्क हैं एक्सेप्टेड रिस्क, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनडायरेक्ट अलग है, तो इंस्ट्रक्शन के ऊपर है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर का या फॉल्ट नहीं है, क्लाइंट का फॉल्ट नहीं है। एक्सेप्टेड रिस्क आर वार हॉस्टिल, लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, चाहे वो डिक्लेयर्ड वार हो या ना हो, कोई विदेशी शक्ति आ गई, दुश्मन आ गए हमारी कंट्री में,
और घुस गए, या हमारे देश में या उस एरिया में रिबेलियन हो गया, मीन्स सत्ता के अगेंस्ट कोई क्रांति आ गई, मिलिट्री का इंसरेक्शन हो गया, कोई ऐसी शक्ति आ गई जो कंट्रोल से बाहर है, और या ऐसे झगड़े जो एम्प्लॉयज़ की वजह से नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, पब्लिक की वजह से हैं, वो सब चीज़ें आप कह सकते हैं हिसाब से बाहर, कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन से बाहर, या वो जगह जो ऑक्युपाई कर ली क्लाइंट ने, ये सब चीज़ें उस तरह से आती हैं जिसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं एक्सेप्टेड रिस्क और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड और unknown events or force measure as was used. Insurance of works. Insurance of works. Without limiting, insurance work is very important definition for your information. Insurance work is without limiting its obligation and responsibilities under given clause hereof, contractor shall insure in joint names of client and contractor against all loss or damage from whatever cause arising other than accepted risks, for which he is responsible or it is responsible under terms of contract and in such manner that client and contractor are covered during period of construction of works and also covered during period of maintenance for loss or damage arising from a cause occurring prior to commencement of by contractor in course of whatever operations carried out by it for purpose of complying with its obligations under given clause hereof. आपको बीमा तो कराना पड़ेगा काम का, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपकी इसमें कोई ऑब्लिगेशन की लिमिट नहीं है, कोई जिम्मेदारी की लिमिट नहीं है, बीमा तो कराना पड़ेगा जब तक का आपका काम चल रहा है। और ये बीमा जॉइंट नेम में होगा क्लाइंट के और कॉन्ट्रैक्टर के, कोई भी नुकसान के लिए, कोई भी इंजरी के लिए कह सकते हैं, डैमेज हो गई आपकी, कोई भी कारण रहा हो, एक्सेप्टेड रिस्क के अलावा जिसको आपकी जिम्मेदारी में आता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके उत्तरदायित्व में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आता है, वो सारे इंश्योरेंस आपको कराने होंगे कॉन्ट्रैक्टर को। और जब तक काम चल इस विशेष तौर से परमानेंट काम जिसकी पेमेंट आपको मिलेगी, या उसको तैयारी करने वाले टेम्पररी काम जो फुल वैल्यू के वर्क्स एंड टेम्पररी वर्क्स to full value of such works executed from time to time plus 10% to cover whatever additional expenses of an incidental to demolition, removal, restoration or repair of every such loss or damage, materials constructional plant and other items brought onto site by contractor to full value of such materials, constructional plant and other items or things. All plant, equipment and materials of whatever kind being provided under separate contract or by nominated subcontractors for incorporation in works from time such plant, equipment and materials are taken over by contractor at port, workshop or place of manufacturing as case may be until delivery to site. With an insurer and in terms approved by client, which approval shall not be unreasonably withheld, and contractor shall, whenever required, produce to engineer
or its representative, policies of insurance and receipts for payment of current premiums, provided always that without limiting its obligations and responsibilities as aforesaid, nothing in this clause contained shall render contractor liable to insure against necessity or repair of construction or whatever work constructed with materials or workmanship not in accordance with requirements of contract. Then we have to understand these provisions very well, because without understanding of these provisions, it's difficult for you to control and to control yourself as well. Not only that, you have to control your client or contractor or workman, you have to control. First, you have to learn what we are saying. That's the only reason I'm trying to share this information with you. अगर आप ये नहीं समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं जानेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा काम करना, क्योंकि लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं और जो नहीं होनी चाहिए। और इंजीनियरिंग में आपको कुछ सिखाएगा नहीं, ये इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब्जी बेचने का या सामान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप गए साबुन तेल ले लिया। ये इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ये टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट है, हमको ये समझना होगा। ये लैंग्वेज बेशक इसकी टेक्निकल नहीं है, लेकिन टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट शैल एक्सेप्ट इफ एंड सो फार एज स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड्स अदरवाइज। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो अलग बात है। कॉन्ट्रैक्ट शैल इंडेमनीफाई एंड कीप इंडेमनीफाइड क्लाइंट against all losses and claims for injuries or damages to whatever person, whosoever person, or whatever properties whatsoever, other than surface or other damage to land being or crafts being on site suffered by tenants or occupiers, which may arise out of or in consequence of construction or maintenance of works, and against all claims, demands, proceedings, damage, costs, charges, and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto, provided always that nothing herein contained shall be deemed to render contractor liable for or in respect of or to indemnify PDA, client, against whatever compensation or damage for with respect client against all losses and claims for injuries, damages to whatever person or any property whatsoever. This is made. Now, what is not included? Other than surfaces, or other damage to land being or crafts being on site suffered by tenants or occupiers, which may arise out of or in consequence of construction and maintenance of works, and against the claims, demands, proceedings, damage, costs, charges, and expenses whatsoever in respect of all relation thereto, provided always that nothing herein contained shall be deemed to render contractor liable for in respect of or to indemnify client against the compensation of damage or with respect to this permanent use of occupation of land. Permanent use or occupation of land by works or certain part thereof, save as herein by surface or other damage as aforesaid, right of client to construct works or whatever part thereof on, over, under or through land, client, agents, servants, or other contractors not being employed by contractor, or for or in respect of whatever claims, demands, proceedings, damage, costs, charges, and expenses in respect thereof, or in
relation thereof. Provided further that for purpose of this clause, expression site shall be deemed to be limited to area defined in a specification or shown on drawings in which land and crops shall be disturbed or damaged as an inevitable consequence of carrying out works. Indemnity by client by PW here, so PW is client. Client shall save harmless and indemnify contractor from and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses